Hello everyone, very good morning to all of you. So don't think that it is 9th November current affairs. So actually I was not able to take the session on 9th November. No? So in this session we are going to cover both the 9th November and the 11th November current affairs. Okay. Good morning Debrat. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Very good morning all of you. So in this session we are going to cover both the 9th November current affairs and the 11th November current affairs. क्योंकि 9th November वाले सेशन में ले नहीं पाया था. I was not able to take the 9th November CA. There was a power outage in my home. That's why. Alright. Good morning, Harpreet. Chalo, let's start. So those who are new to the channel, do join this Telegram group. Scan this QR code. Okay, scan this QR code and join my Telegram channel. I'll be sharing all the important PDFs and recent update regarding my classes. So इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. Good morning Priyanka. Good morning Aisha. Hello. ठीक है, चलो. सो 9th नवंबर का पहले एक बार वो उसके पहले दिन के हम क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेरी क्विकली. ठीक है. सो 8 नवंबर का आपका ये था इंडियाज़ क्लाइमेट रैंकिंग. सो वी नो दैट कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स निकाला था इन विच इंडिया हैज़ रैंक 176 आउट ऑफ 180. इट वॉज नॉट अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है. सो किसने निकाला था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने. द नेम ऑफ द रिपोर्ट वॉज यूनाइटेड ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स. ठीक है. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. स्पोर्ट्स अवार्ड का अपडेट था. ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड को रिप्लेस कर दिया गया है विद द अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड. ओके. Then we have some AI initiative. India AI and Meta. Meta is the parent company of Facebook. So India AI and Meta has launched the Srijan Generative AI Center at IIT Jodhpur. So Srijan Generative AI Center कहाँ पे ओपन हुआ है? IIT जोधपुर में. देखो, येस्टरडे रिकैप का मतलब हमारा ये रहता है ना कि आपको वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वन लाइनर करंट अफेयर्स सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज योर एंटायर CA. ठीक है. चलो. Next was the top tax contributor. So we have seen that in the direct tax contribution, Maharashtra has ranked top. After that, Karnataka and Delhi. And we have seen that the direct tax collection was more than the indirect tax. Okay. And which income tax collection was more than the corporation tax. We have seen this thing. ठीक है. आपको स्टेटमेंट बेस में भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वाज मोर देन द इनडायरेक्ट टैक्स, और in that also indirect tax also income tax was more than the corporation tax for the year financial year 24. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. देन RBI ने मैंडेट किया है NBFCs को कि दे मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 25% ऑफ देयर बोरिंग फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. सो कैपिटल मार्केट क्या होता था? जैसे मैंने आपको बताया, इन कैपिटल मार्केट द बॉन्ड्स, द डिबेंचर्स, दीज आर द सम कैपिटल मार्केट टूल्स. सर ये क्लास हम थोड़ी देर बाद जैसे ब्रांच पे जाके देख सकते हैं. राजन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. ब्रांच मतलब व्हाट डज ब्रांच मीन्स? चलो. Yes, yeah, you will get this record in the recorded form also. Okay, it will be on YouTube. You can watch after that also. But I won't be there to reply all your doubts, है ना. सो कैपिटल मार्केट जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, वट एवर द टूल्स हेयर इज बीट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, राइट, या ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें, दैट शुड बी मोर देन और लेस देन मोर देन और इक्वल टू 1 ईयर. जो भी होल्डिंग्स होंगी आपकी, एक या एक साल से ज़्यादा आपके लिए रहती है. ठीक है. अनलाइक मनी मार्केट इन विच द ट्रांजैक्शन शुड बी लेस देन 1 ईयर. द टाइम पीरियड जो होता है मनी मार्केट के लिए लेस देन 1 ईयर होता है, और इन कैपिटल मार्केट इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर. हेलो निशी, वेरी गुड मॉर्निंग. सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो ये टाइम तैयार होने का है तो बाद में. हाँ, डेफिनेटली यू कैन वॉच इट एट योर ओन कन्वीनियंस. ओके. Next was the defense exports related news that the top buyers are the United Defense equipments to USA
France and Armenia. These are the top 3 buyers of Indian defense exports. Okay. It is very surprising to know that India is also exporting the defense equipments. Clear? And remember one more thing, that the biggest export partner of India is also United States of America. उसके बाद आपका UAE. So remember this thing. Then one was the award related with conservation. So Mr. Bibhab Talukdar, he has received the IUCN Harry Messel Award in UAE for a environmental related conservation. ठीक है, तो ये आपका जितने भी 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हमने क्विकली रिवाइज किया. वी हैव रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 8th of November. अब देख लेते हैं 9th नवंबर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. गाइस आपको आवाज़ नहीं आ रही है? प्रियंका, इफ यू आर नॉट एबल टू हियर प्लीज रीजॉइन द सेशन. एग्जिट करके आप रीजॉइन कर लीजिए. व्हाट अबाउट अदर्स? कैन यू हियर मी? यस प्रियंका, प्लीज एक बार रीजॉइन कर लो अगर आपको नहीं आ रहा है ना. चलो. So yes, okay, fine. So international news है. The first one is India ranked 79th among the 142 country in the WJP Rule of Index Law 2024. Very very important. The rule of index. Okay. And who releases this index? Who releases this report? WJP. WJP is what? World Justice Report. World Justice Project. Okay. World Justice Project. So they have released this rule of law index in which India has ranked 79 among the 142 countries. So बहुत ज़्यादा तो अच्छा रैंक है नहीं हमारे यहाँ, ठीक है. And in this ranking, Denmark has topped. Clear? Denmark has topped. So again, you must see a trend here that in most of the indexes, the European nations, they always topped. Because जो भी ये trend बना रहा है, जो ये law बना रहा है, they are from the European nations only. Okay, so Denmark was number 1, Norway was number 2, and Finland was number 3. So all the Nordic countries, all the European countries are the top performers. Exactly. ठीक है. And what is rule of law index? Whether the country is following, whether the things happening in the country, they are happening as per the law or not. Okay, so India is in the middle. Not too great, not too bad. So remember this thing. And the lowest ranked were the Venezuela, then Cambodia, Haiti, Afghanistan, and Myanmar. Pakistan is also one of the poorest one. ठीक है. So ये आपको यह ध्यान रखना है. So how you can prepare your short notes? Rule of law index released by WJP. India 79th, Denmark first. Okay, like this you can make your short notes. Chalo. Next we have the 27th Commonwealth Head of the Government meeting held in Apia, Samoa. Samoan island, it is an island in the Pacific Ocean. Okay, so the island of the Samoa. And the meeting of the Commonwealth Head of the Government, it has held in Apia. Okay, and the theme of this meeting was One Resilient Common Future, Transforming Our Commonwealth. Okay, and this meeting celebrated the 75th anniversary of the Commonwealth. तो पहले समझ लो कि Commonwealth Parliamentary Association है क्या, है ना? So it was previously known as the Empire Parliamentary Association. So you should know that what was the Commonwealth. So it basically वो क्या थे, जो भी British जिस countries में in countries where the British ruled, those colonies were known as the Commonwealth nations. Okay, is it clear? Yes, no? So basically Commonwealth nations, these are the nations
which there are total 54 countries in this. Okay, and most of them were the former British territories or the former territories of the British Empire. Okay, so remember this thing. चलो, so हम यहाँ पे देख लेते हैं. इस बार जो था आपका, it was the 75th anniversary of the Commonwealth. Okay, and King Charles III, he attended the first Commonwealth head of the government meeting as the head of the Commonwealth. ठीक है, and from India who represented Union Minister Kiran Rijiju, he is the Ministry of Parliamentary Affairs. Okay, so remember this thing. So आपको क्या venue पता होना चाहिए. You have to remember the venue where it was happened. So it was happened in Samoa. Okay, and remember the theme. Theme is one resilient common future. Okay, so ये दो facts आपको याद रखने हैं. Alright, and the Secretary General of this Commonwealth Parliamentary Association is Mr. Stephen Twigg, and the headquarters is in London, UK. It was founded in 1911. That's why the this association was founded in the 1911. Okay. Is it clear? चल. What are you writing? Okay. अच्छा, so one student was asking sir 75th year कैसे हो गया, है ना. देखो, ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बात हो रही है, राइट. यहाँ पे हमने बात की है कॉमनवेल्थ के 75th एनिवर्सरी. सो कॉमनवेल्थ वाज फाउंडेड इन 1949. ओके, द कॉमनवेल्थ नेशंस. ओके, एंड 2024 is the present year, so 75 years have passed away. Okay, that's why the 75th anniversary of the Commonwealth nation we have celebrated. Chalo, next is the growth in percent days in Manrega, 1660 crore to 2923 crore from the financial year 2015 to 25. Okay, now let's understand what the news is about. First, you have to understand that Manrega is a scheme in which the government provides 100 days of employment. Okay, 100 days of employment, and which it is for the unskilled work they have to do. You can see here these work. Okay, these are basically the laborers. They are carrying this mud or sand and they are transferring it. So these are the works like digging up a hole for road construction. So all these are the unskilled work, and government say that we provide you 100 days of employment in a year through unskilled work. Okay, and in return we are going to pay you. So ये आपका मनरेगा स्कीम के बारे में. Alright, is it clear? Yes, no, आप लोग बता दो. ठीक है. So increase in employment, percent days. What is percent days? It means basically how much work days have generated in the under the scheme. How many work days, how many days the person is working. Okay, so percent days under Manrega, it has rose by 76.1% in from 2006-7 to 24-25. Okay, so we know that the Manrega Act 2005 it started, na. Sorry. So Manrega, this scheme was started in 2005. So from 2006 onwards and up till 2024, the number of person worked there, it has increased to 76.1%. Okay. Also, the budget for Manrega is 86,000 crore for the financial year
2025 with a 7% rise in the minimum wage rate. Okay, so these are the important things you have to remember. First thing you have to remember is about the Manrega scheme. So first thing you have to remember about the Manrega scheme, that it was started through Manrega Act of 2005, under which the government is providing 100 days of employment, 100 days of employment for unskilled work. Okay, so remember this thing. Is it clear? And everything is now Aadhaar based. ठीक है, आधार से आपके डेटा को आइडेंटिफाई किया जाएगा, and according to that data the government provides money in return of that work. ठीक है, चलो next is the RPF and Ministry of Women and Child Development launched revised SOP for the protection of vulnerable children. देखो, first of all remember two organization, RPF plus Ministry of Women and Child Development, protection of vulnerable children. Vulnerable children, like this you can make a short note. So you must have seen that in the railway premises many small children, they are working as tea seller, they are working as the cleaners. Okay, ये आपने नोटिस किया होगा, है ना, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हो कि छोटे छोटे बच्चे आके दे प्रोवाइड यू टी, दे प्रोवाइड यू, दे क्लीन द सरफेस, है ना. So in order it is a illegal thing. You can't, this is known as what? Child labor. You can't do this thing. Okay, so in order to stop this thing, RPF and Ministry of Women and Child Development, they have released some new standard operating procedures. Let's say if you have if someone find some children working as child labor, they can now act as per the new operating procedure. Okay, so there is children help desk. Okay, every major railway station will have a children help desk in the support for these children. Okay, and then anti-human trafficking units, this would be established. Okay, so in a state like Assam, Gujarat, Punjab, Haryana, Chhattisgarh and MP, because what they do is they exploit children's, right, and they force them to do some illegal things. Right. It is a great initiative. Actually, see, it is a regular happening in the railway station. I believe you all must have seen this thing. You know? So there should be some proper process. And see what happens is the normal human being, na, he would just ignore it. Oh, चल बच्चा बेच रहा है, कोई problem नहीं. बच्चा चाय बेच रहा है, कोई problem नहीं. But there's a big issue. It is not just one of our incidents. It is happening across India, and we must act. The government must act to stop these kind of things. We have to teach children. उनको पढ़ाना है हमें, अच्छा career provide करना है. उन्हें आप force करके just for the sake of money, you can't force them to sell tea and anything else, है ना? But मजबूरी में बच्चों को करना पड़ता है. If no one is there to take care of them, and this, you must have seen that in movies, a person who is providing food and shelter to the children, they want them to go and beg, so they have to go because they know that the person is providing food and everything. So awareness नहीं है, छोटा बच्चा है प्लस, तो इनके लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए. तो काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है डेफिनेटली. Alright, so RPF plus Ministry of Women and Child Development, they have started working on the vulnerable children. ठीक है. So RPF के बारे में कुछ static fact, let's remember. So it is the armed forces which work under the Ministry of Railways. Okay, and it is a statutory body. It has been made as per the RPF Act of 1957. ठीक है. The present DG is Manoj Yadav. Headquarters is in New Delhi. So these are the two initiative facts you have to remember. चलो. Next one is SEBI allowed Indian mutual funds to invest overseas fund with exposure to Indian securities. ठीक है. So now investment limited means Indian mutual funds can invest in overseas mutual funds and unit trust with up to 25% exposure to Indian securities. What?
ओके। अच्छा, देयर इज वन actually RRB PO interview is going on na. So there was a very good question asked by one student that, sir, why the financial year of India is from April to March? ठीक है, so इसके पीछे एक रीजन है। यस, देखो इसके पीछे एक रीजन है दैट हमारा जो एग्रीकल्चरल सीजन होता है ना, स्पेशली द रबी सीजन, ठीक है, सो उसकी जो हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती, इट इट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च, मार्च तक जाके कंप्लीट होती। दैट्स वाई सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो, अब देखो ये ऐसा नहीं था कि रैंडमली स्टार्ट हुआ। ब्रिटिशर्स जब आए थे ना, ब्रिटिशर्स ने इनको स्टार्ट किया था, ठीक है। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्लिन। So Britishers have started this thing, and but they have started because they have seen that during that time agriculture was the main economy stay. Everything in India, the majority of the farmers, they were engaged in the agricultural activities, and they completed their harvesting for the rabi crop in the month of March. So उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने स्टार्टेड दैट कि जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए इट इज फ्रॉम मार्च, अप्रैल टू मार्च। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो इस टाइप के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों से हम बात करते हैं तो हमें पूछने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। अच्छा, जो भी बच्चा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ओके, यू कैन स्कैन दिस QR कोड and you can join the telegram channel. I have shared one list of static banking terms, ठीक है, so उसको एक बार आप देख लेना, do watch that. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास है कि नाउ जो इंडियन म्यूचुअल फंड है, they have the option to invest some of their funds in overseas mutual funds also. Okay, जैसे अब लेट्स से देयर इज अ टाटा म्यूचुअल फंड, तो टाटा म्यूचुअल फंड व्हाट दे डू इनिशियली वाज कि जो जितने भी पैसे, जो भी पैसा लेट्स से किसी बंदे ने दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से निशी है ना, निशी हैज परचेस्ड टाटा म्यूचुअल फंड, सो शी हैज गिवन, लेट्स से शी हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज। सो टाटा म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होगा, द फंड मैनेजर ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड, he will invest 1 lakh rupee in different securities, different companies, different equities of different companies. But पहले क्या था, ये डोमेस्टिक था, but now the SEBI has said that now they can invest in the overseas mutual fund also, let's say outside India, ठीक है। so around 25% जो भी उनका पैसा है, now they can invest in the overseas market also. Is it clear? चलो, so what are the key features? Single investment vehicle, all contribution must be pooled in to one vehicle, no segregated portfolio, overseas mutual fund must operate as a blind pool, ठीक है, कोई सेपरेट वो नहीं होगा, देयर शुड बी नो सेपरेट पोर्टफोलियो कि दिस इज द ओवरसीज म्यूचुअल फंड, राइट। So remember this thing. An observance period is 6 month monitoring if the 25% limit is breached. So आपको ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखनी. Now just you remember that now Indian mutual fund can invest in the overseas mutual fund unit trust with up to 25% exposure to the Indian securities. Now that thing you have to remember. Is it clear? Yes, no? So इससे फायदा क्या होगा? They will get the exposure of the international market also, na? Is it clear? And one more important thing is, जो भी foreign mutual fund में invest होगा, that money should not be more than 25% of its total investment in the Indian stock market. Let's say Indian stock market where they have deposited 1 lakh rupees, they have contributed 1 lakh rupee in the Indian one.
सो इसके 25%, इट मीन्स 25,000 रुपीज से ज़्यादा आप ओवरसीज मार्केट में नहीं कर सकते. यू वोंट बी एबल टू invest more than 25% what they have invested in India. Is it clear? Yes, no in the comment section. So you have to remember this thing. And who has allowed this? SEBI. Clear? Chalo. What have you said? Blind pool. Blind pool means, see, blind means what? You don't know about it. So let's say the investor, okay, he don't know that in which mutual fund, in which overseas mutual fund my money has been invested. So he will trust the fund manager कि भाई वो आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना. दे वोंट बी एबल टू नो दैट किस म्यूचुअल फंड में इन्होंने किया है. दैट्स वाई द ब्लाइंड पूल. इस वजह से देयर शुड बी नो सेग्रीगेट पोर्टफोलियो दैट दिस इज द इंडियन पोर्टफोलियो एंड दिस इज द फॉरेन पोर्टफोलियो. ओके, एक सिंगल पोर्टफोलियो रहेगा, राइट. सो रिमेंबर दिस थिंग. चलो, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं. नाउ दिस इज द स्टैटिक पार्ट. व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? देखो, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ. लेट्स से if I am purchasing Infosys share, I am purchasing Infosys share, okay. I purchase it, I sell it, I purchase it, I sell it. This is known as stock trading. ठीक है, ये इक्विटी वाला चीज हो जाता है, स्टॉक मार्केट पे आप ये करते हो. बट व्हेन यू हैव वन शेयर फ्रॉम Infosys, you have purchased one from Wipro, one from other company like this. So mutual fund is an investment vehicle that pools money from multiple investors. For example, let's say there is this Oliveboard mutual fund. Okay, so in Oliveboard mutual fund, I will take money from Nishi, I will take money from Debrat, I will take money from Vasumati, right? Like this, I will take money and I will invest their money in the different diversified portfolio. For let's say Devrat has given me 2 lakh rupees, so I will invest 20,000 of his money in, let's say, Tata Motors, 20,000 of his money in ICICI Securities, 20,000 like this in the different portfolio of the companies. Okay, I can invest in stocks also, I can invest in bonds also, I can invest in other securities also. Okay, so it is basically having a pool of money from multiple investors and to invest in the diversified portfolio. ठीक है, ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? What is mutual fund? You are giving me money and I'll be investing it in the variety of portfolios, variety of stocks. Okay? And in return, it is also subjected to market. So if the market will go up, the Sensex will go up, the Nifty will go up, your money, whatever money you have invested, it will also increase, right? So once you start earning, do invest in the mutual fund. Because see, mutual funds, it is for a long term purpose. It is not like that you invest in mutual fund today and after 5 days you can withdraw it. No. At least you should invest for 2 to 3 years. It is a long term thing. Remember, it is a long term thing. Okay? So it can be equity mutual fund. For example, HDFC equity fund, Tata equity, like this. Then we have debt mutual fund. So invest in fixed income securities like government bonds, right? So debt means what? Loan. And in equity mutual fund, you have the growth rate. It is not fixed. It depends upon the market thing, right? But in debt mutual fund, you invest in fixed income securities. म्यूचुअल फंड सही है, राइट. ठीक है. सो इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, रिटर्न इसमें कम रहता है, इक्विटी में ज़्यादा रहता है, बट इक्विटी में गिरने का भी डर ज़्यादा रहता है. देयर इज मोर फियर इन इक्विटी ऑल्सो. चलो, सो दीज आर द बेनिफिट्स. डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, राइट. सो दीज आर द थिंग. इक्विटी फंड्स रिस्कियर बट हाई रिटर्न्स. डेट फंड लोअर रिस्क बिकॉज स्टडी रिटर्न्स. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. एंड नाउ देयर इज हाइब्रिड फंड ऑल्सो.
आपको देखना जब भी आप म्यूचुअल फंड वाले को बुलाओगे ना, वो आपको बुलाएगा सर हाइब्रिड फंड में कर लेते हैं, थोड़ा सा फिक्स भी रहेगा, आपको सिक्योर भी रहेगा और ग्रोथ के लिए आपको इक्विटी भी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इंडिया यूएई कोलैबोरेशन इन द डिजिटल पेमेंट्स ट्रेड एंड जैवान कार्ड लॉन्च। जैवान, ठीक है। सो इंडिया एंड यूएई, ये देखो ये जैवान कार्ड है, इसको लॉन्च किया है और इंडिया यूएई ने कोलैबोरेट किया है। सो इंडिया में जो यूपीआई है, यूपीआई इंटरफेस एंड अरेबियन ऑटोमेटेड नेटवर्क फॉर इंस्टेंट पेमेंट्स, आनी लिंक, ठीक है। सो इन्होंने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को ईज आउट करने के लिए यूपीआई को लिंक कर दिया है विद यूएई एएनआई। सो दे हैव लिंक्ड यूपीआई विद द यूएई's आनी फॉर ईजिंग आउट द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। ओके, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अदर चीज़ें क्या है ट्रेड में, देखो इंडिया फूड पार्क इन्वेस्टमेंट, द यूएई प्लेस $2 बिलियन फॉर फूड पार्क्स इन इंडिया सपोर्टिंग यूएई फूड सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग जॉब फॉर इंडियन फार्मर्स। भाई देखो ये हमारे यहाँ फूड पार्क्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब यूएई में तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं उगती ना, बट इन इंडिया इट इज़ गुड, तो दे वांट टू इन्वेस्ट। और उससे क्या होगा, फूड पार्क्स में इन्वेस्ट करेंगे, सो इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू यूएई, ऑल्सो इट विल क्रिएट जॉब्स फॉर द इंडियन फार्मर्स। ठीक है, और इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है दैट इज नोन एज सेपा। सेपा इज व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। Okay, there are different levels of trade relations. We have SEPA, then we have CECA, right? Like this there are different categories of trade relation. This is the very starting one, SEPA. Okay, so ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। UAE is one of the UAE is the second largest export partner of India. Good, all right. So आपको ध्यान रखना how you are going to make short notes. India plus UAE digital payment. Okay, in below India mention UPI and under UAE may mention ANI. Okay, chalo. Now regarding FDI, UAE is now the India's fourth largest investor also. Okay, so they have invested in investment offices and Bharat Mart, logistic hubs which are being established, right? Then Indian Institute of Foreign Trade campus in IFT will launch its first overseas campus in Dubai. So these are the certain things. देखो India UAE relation में it is very useful. Clear? And what is this Jaiwan cards? It is the National Payment Corporation of India launched this Jaiwan card in partnership with AI Etihad Payments. So basically it is based on RuPay technology, है ना? And this will promote basically what, transaction ease. They will ease out the transactions. ठीक है, जैवान कार्ड। और इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, दे आर यूजिंग दिस रुपए प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड यूएई हैज बिकम द फर्स्ट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर टू अडॉप्ट द रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? So remember saying this Jaiwan card, it is using RuPay technology. So we have RuPay, we have this UPI, we have this Bharat Pay, like this. There are multiple technologies. Chalo. Income disparity in India declines by 74.2% since financial year 14. SBI has given a study, and how much it is true, we don't know. Chalo. So this SBI EOR report, okay, ये याद रखना, the name of the report, SBI EOR report. Okay, so in the finding they have seen that income disparity has reduced by 74.2%, but there is a category amongst the earners up to 5 lakh. So those who are earning from 0 rupees to 5 lakh rupees, in this category the income disparity has declined. They are not showing that above 10 lakh because it is a severe inequality. There is a severe inequality. If you go beyond the 5 lakh rupees, there is a severe inequality, and you must know that the top 1% holds the 70% of the money in India. Okay, also the expanding tax base. Now more and more people are filing their tax returns, like Uttar Pradesh, Bihar and Andhra Pradesh. ठीक है, 56.7% of total tax revenue with a tax to GDP ratio of 6.64. डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट हुआ है। ओके, तो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 56.7% इज द डायरेक्ट टैक्स।
Okay. Also the ITR filing surge है, they have increased. You don't have to remember that data, remember, है ना, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको. You should know the trend that the income disparity up to 5 lakh rupees, those who are earning up to 5 lakh rupees, they have, the income disparity has declined. But see, if you see above 5 lakh rupees na, there is a huge income disparity, right? Chalo. Next is the Gini coefficient. Gini coefficient is basically, it measures the income inequality. Income inequality. So it is a static term. Okay. It measures income equality from 0 to 1. Okay. So if the value is near 0, it means it is equal. राइट पोल खुल जाएगी उनकी अगर दे हैव रिलीज्ड. और जैसे जैसे आप 1 वैल्यू के पास बढ़ रहे हो, मतलब इनइक्वालिटी इज राइजिंग. ठीक है. सो ये आपका एक लॉरेंस कर्व होता है, राइट, उससे ये कैलकुलेट होता है. क्लियर. सो लॉरेंस कर्व, जीनी कोफिशिएंट, इट इज शोइंग व्हाट, इनकम इनइक्वालिटी. ओके. सो रिमेंबर दिस थिंग. So if the value is low Gini coefficient, it means more equal income distribution. If high Gini, it means if it is closer to 1, like 0.98, 0.99, it reflects higher income inequality. ठीक है. Is it clear? चलो, ये वर्ड याद रखना, जीनी कोफिशिएंट. ओके. बहुत लोगों को पता नहीं रहता है जीनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व. इट इज शोइंग व्हाट. तो लॉरेंस कर्व आपका ऐसा कुछ रहता है, ग्राफ, है ना, और इसके अंदर जो भी एरिया रहता है, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है जीनी कोफिशिएंट की. ठीक है. सो इट इज रिलेटेड विथ इनकम इनइक्वालिटी. सो रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट वन इज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर अवॉर्डेड फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. इससे पहले आपको ध्यान होगा, अवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, शी हैज आल्सो रिसीव्ड दिस हाईएस्ट अवार्ड. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड? सो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिजी, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी. Okay, and it has been presented by the president of Fiji, that is Ratu William K. Katinover. Okay, and who has received this? Sri Sri Ravi Shankar. All right. So remember, he is the 6th recipient of this award globally. ठीक है. So याद रखिएगा, awards and recognition में one liner thing है, nothing more to explain here. Next award thing is 68 Ballon d'Or. Spain's Rodri and Etana Bonatti won the men's and women Ballon d'Or. So again, award and recognition. So this is, he is Rodri and she is Etana. Both are from Spain. They have won the men's and women Ballon d'Or. This is the highest award in the FIFA. ठीक है. So remember this thing. Rodrigo Hernandez and Etana Bonatti. Clear? चलो. Now the practice question. Then we'll quickly start the today's current affairs. Okay. So India ranks 79th out of the, regarding this rule of law index released by World Justice Project, WJP. So India ranked 79th out of 142 countries with a law score of 0.5. Denmark, Norway, and Finland occupied the top 3 positions. So correct answer here is C. Both 1 and 2 are correct. Yes, both 1 and 2. Good. ठीक है. देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने जो चीज़ पढ़ा उस पर बेस आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. ये आपको दो, इट इज शोइंग 2 थिंग्स, वेदर यू आर एबल टू रिकॉल इट, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट करेक्टली, एंड दिस विल improve your confidence. The Gini coefficient is used to measure which of the following things: income inequality, economic growth, population density, or employment rate. So the correct answer is A, income inequality, right? Yes, good. ठीक है. Then there's this 3 statement regarding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Manrega. So employment under Manrega has increased by 76.1%. All right, from 2006 to 2024. The financial year 24-25 budget allocation was 86,000 crore.
and 99.3% of active Manrega workers are Aadhaar seeded. And so tell me the correct answer. The correct answer is B, 1 and 3. Second is incorrect because it was 7% increase. This is a very difficult question. Okay, this percentage was 7%. See, it is a very, very difficult question. है ना? और why I'm giving you this? Why I'm giving you this? The reason being, these kind of questions will come in your paper also. है ना? So if you know that, I believe, see, majority of the student will leave this question, and that is the best thing you should do. You should know how to attempt the paper also. 40 में से 40 question नहीं करके आने. So these kind of question in which percentage, value, data, facts are given, na, avoid it. Try to leave it because you won't be able to memorize. है ना? चलो. Next is Guru Sri Ravi Shankar has recently won which award? So Australia, Fiji, Nepal, Japan. Very easy question. So he has won the highest order of. यस देखो ये कराना पड़ता है. अगर मैं आपको सिंगल लाइनर बस क्वेश्चन देते रहूँ ना तो वो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा. देयर यू विल फाइंड डिफिकल्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. राइट? यस, फीजी इज द करेक्ट आंसर. गुड. बी. As per the SEBI's directive, India's mutual fund can invest in overseas with what maximum exposure to Indian securities? So the correct answer is B, 25%. All right. चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन है. बैलन डियर अवार्ड किसको मिला था, है ना? राइट, बैलन डियर अवार्ड किसको मिला था? क्विकली आप अपने बताना किस एक्सपोर्ट्स के लिए दिया जाता है. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट 11 नवंबर. इसका आंसर मैंने थोड़ा क्विकली मूव कर लिया. पॉज करने की कोशिश मत करना, अपना आंसर अपने हिसाब से बताइएगा. चलो 11 नवंबर का करते हैं. Okay, so let's start the 11th November current affairs. Those who are new to the channel, do join this telegram code. स्कैन कर लो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम कोर्स. ओके, चलो. तो हमने येस्टरडे रिकैप तो मैं अब आपको नहीं कराऊंगा बिकॉज वी हैव रिसेंटली डन इट. ओके, तो ये आप स्लाइड से पढ़ लेना एक बार. बिफोर दैट व्हाट वी कैन डू इज लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी टर्म ऑफ द डे. BFE टर्म ऑफ द डे. अच्छा देखो, ये BFE टर्म ऑफ द डे ना मैं आपको PPT में नहीं देता हूँ. आई डोंट गिव यू इन द PPT. आई वांट यू टू मेक अ शॉर्ट नोट्स फॉर दिस. ठीक है? सो डू हैव अ पेन कॉपी विथ यू रेडी, है ना? आई बिलीव सब लोग रखते भी होंगे. यू मस्ट हैव पेन एंड कॉपी विथ यू. सो वी विल टॉक टुडे अबाउट द महारत्ना एंड नवरत्ना. All right. So what are this Maharatna and Navratna? What are these things? So basically these are the titles. These are the titles given to the public sector enterprises. And why they are given? Because this title shows how financially strong, how sound is the company, how economically sound is the public sector enterprises. Okay, right? So Maharatna title, it is given to the to those companies whose annual turnover is more than 25,000 crore rupees. Okay, and the net profit is 5,000 crore. Once you achieve this limit, once you achieve this target, you would be given a status of Maharatna. All right, so there are three things, and the net worth should be 15,000 crore. So once you achieve this, you will become a Maharatna. But before becoming a Maharatna, you must have achieved the title of Navratna. So आपको पहले तो नवरत्ना होना पड़ेगा, then आपको ये तीनों टारगेट अचीव करने पड़ेंगे, then you would become a Maharatna company. Okay? And ऐसा नहीं कि बस एक साल इतना टारगेट हो गया तो you will become. You have to maintain it for 3 years.
So once you do this thing, you will become a Maharatna company. And once you become a Maharatna company, there is certain benefits. You can invest up to 5,000 crore rupees without taking any kind of approval. Okay, so example ONGC, right? SAIL, Steel Authority of India Limited, NTPC, these are the Maharatna. And today we have 14 Maharatna companies, right? Similarly for Navratna, Navratna is again, इसके लिए आपको पहले से तो मिनी रत्ना होना पड़ेगा. यू शुड बी अ मिनी रत्ना, राइट. एंड यहाँ पे जब आपको नवरत्ना टाइटल मिलता है, सो यू वुड बी एबल टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ रुपीज विदाउट टेकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल, सो दैट आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. सो बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दीज आर द Navratna. Then we have Mini Ratna. In Mini Ratna also there is Mini Ratna 1, Mini Ratna 2. Okay, we don't have to go in that, right? So as of now there are 14 Maharatna companies and 24 Navratna companies as of now. Okay. So I believe it is clear what are Navratna and what are Maharatna. This is your banking, finance and economy term of the day. Clear? Yes, no? Yes. So I've explained it multiple times also. Yes, yes. ठीक है, चलो. So start करते. Important day के according. So 11th November is the National Education Day. And why it is celebrated? It is celebrated to commemorate the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Okay, he was the first education minister of independent India. Maulana Abul Kalam Azad. So remember this thing. He was very much instrumental in establishing institutions like IITs and UGC. Right? So very important day, very important person. Okay. So remember this thing. National Education Day is celebrated to commemorate Maulana Abul Kalam Azad's birth anniversary. ठीक है, चलो. Brazil becomes second BRICS country to not join China's BRI. BRI is what? Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative. ठीक है. देखो एक मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ से. So आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है, we consider it is what गिलगित बल्तिस्तान है ना, POK बोलते हैं इसे, right? And we know that here we have China and here we have Pakistan. So China एक रोड भी बना रही है like this, and that is known as what? CPEC, China Pakistan Economic Corridor, and it is the part of this Belt and Road Initiative of China, right? ये ऑब्वियस बात है, इंडिया तो ज्वाइन करेगी ही नहीं, बिकॉज इंडिया से पास हो रही है यहाँ से पीओके एरिया से ये एक रोड बन रही है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, विच इज नोन एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इंडिया जिसका फुल अपोज कर रहा है. इंडिया इज अपोजिंग दिस सीपैक. अल्टीमेटली इंडिया इज अपोजिंग दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ठीक है. सो ब्राजील इज ऑल्सो नाउ अपोजिंग दिस चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिकॉज ब्राजील इज बेसिकली, यू नो दैट कि ब्राजील भी इंडिया को सपोर्ट करता है. ओके. सो ब्राजील हैज डिक्लाइन टू फॉर्मली जॉइन दिस BRI, ज्वाइनिंग इंडिया इन ऑप्टिंग आउट. सो सबसे पहले इंडिया ने ऑप्ट आउट किया था बिकॉज ऑफ दिस सीपैक कॉरिडोर. ओके. एंड ये आपके वहाँ के ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ही हैज गिवन अ प्रॉपर स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. क्लियर. ऑल्सो वी हैव सीन दैट ब्रिक्स हैज नाउ एक्सपैंडेड. Initially Brazil, Russia, India, China and South Africa were the only members. Now they have Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi and UAE. So इसका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, ICU. ओके, नॉट YOU, ICU. So these are the new countries who have joined BRICS. So remember this thing. I for Iran, Saudi, Ethiopia, Egypt and U for UAE. Is it clear? Chalo. So this Belt and Road Initiative, it was launched in 2013. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ऑफ चाइना. चलो मूविंग ऑन. सो ब्रिक्स के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स आप समझ लो. इट वाज फाउंडेड इन 2009. साउथ अफ्रीका जॉइंड इन 2010.
Okay, it is the economic cooperation and development among emerging economies. So again, India, South Africa, Russia, these were the main members, and they have their own bank that is known as the New Development Bank. Basically, they want to oppose. See, we in East, and there's a difference between West. So in West, you have this United Nations and their bank IMF, World Bank, like this. So India, China, Russia, we are the countries of the East. So we say that we will form BRICS. We have our own bank, New Development Bank, and we are basically a counter for the West. So this is, they want to remove the West dominance. That's why they have created BRICS. So it is basically East versus West, you can say. All right. So we have this New Development Bank. Its headquarters is in Shanghai. Okay, and it was established in 2014 for infrastructure funding. Right. So अगर building बनानी है, road बनानी है, so you will use this fund from NDB. ठीक है. And recently we have seen these are the countries who have joined the BRICS. चलो. So यहाँ पे clarity is very less. So what is this? 17th Urban Mobility India Conference Expo held in Gandhinagar, Gujarat. So Urban Mobility India. This is the conference that is going on in Gandhinagar, Gujarat. All right. What is the theme? Theme is standardization and optimization of urban transport solution. So who is organizing? Which ministry is organizing it? Ministry of Housing and Urban Affairs. All right. So it is organizing it, and it will award for the best practices project in urban transport. So see, what does urban transport means? The metros, okay, the electric buses. So these are the most important urban transport we are witnessing. Okay, so there's a huge expo going on in Gandhinagar, Gujarat. Right, so remember this thing. So they can ask you about the venue, that the Urban Mobility India Conference was held in which of the following cities. So answer is Gandhinagar, Gujarat. Okay, chalo. Ministry of Defense Minister Rajnath Singh launches Aditi 3.0 challenge and Disc 13 during Swalomban 3.0. So let's understand one by one what is Swalomban, what is Aditi. Okay. So event name is Swavlamban. Okay, it is organized by Naval Innovation and Indigenization Organization, which is at Bharat Mandapam, New Delhi. So this function Swavlamban 3.0 was organized in Bharat Mandapam. Okay, and in this event we have this Aditi 3.0 and Disc 13 were launched. So what is Aditi 3.0? Again, the purpose is to drive innovation in defense through startups and enterprises. ओके और यहाँ पे स्पेशल फोकस क्या है? हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम. Microwave weapon system. See, you must have seen in movies that there is a big vehicle in which there is a wave-like thing, wave-like device is there, and it is shooting waves, and there is a big crowd. So this microwave can hit people, and it can cause severe pain. So these are the things they are now developing. Okay, and Disc 13 it will focus on improving armed forces in areas like artificial intelligence, military communication, and autonomous system. So basically, Disc 3 focuses on AI. Aditi focuses on high power microwave system. Okay, is it clear? और ये जो स्वावलंबन है, it is basically a exhibition in which we show our technology, our concepts, what we are doing for the defense sector. Okay, so many new startups, MSMEs, all they come and they show their talent, they show their new concepts, what they are doing for the defense sector. So how you are going to make short notes? In Swavlamban 3.0 we have Aditi. Aditi is what? High power microwave, and the second one is Disc 13. It is what? AI related. So like this you can make short notes. Indian Railway signs MOU with Switzerland for technical cooperation.
So again, we know that Switzerland, the best country in the entire world, be it tourism, be it technology, be it banks, be it watches, Swiss watches, right? Switzerland tourism. So everything Switzerland is the best, है ना? What do you think? चलो, अच्छा, tell me, what is your dream destination? Dream destination, like which country you want to visit? सबका एक ना एक वो होता है choice. What's your choices? Which country you want to visit? ये सब होना चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ें होनी चाहिए. यू वांट टू अचीव, यू वांट टू एक्सप्लोर. सो दुबई, गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? इजिप्ट, नाइस. अदर्स डोंट वांट, आई बिलीव. इंडिया ही ठीक है यार, इंडिया ही घूम लेते हैं. So Indian Railways and Switzerland, they have Switzerland DTEC. They have renewed an MOU to enhance technology cooperation. Vasumati, Norway, great. You like winters, I believe. It is very cold, Norway. ठीक है. सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, है ना. जस्ट रिमेंबर, इंडियन रेलवेज हैव साइंड एन MOU विद स्विट्जरलैंड फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन. चलो, next is Australia is selected as the country of focus for the IFFI 2024. So what is IFFI? It is basically International Film Festival of India. ठीक है सर, आप सबको कंपनी दोगे? ले चलो, और क्या. I'll give you the company. मेरी टिकट्स करा देना आप बस. Okay. So moving on. So just remember, so Australia is the country of focus for the 55th International Film Festival of India. Okay. So ये आपका 20th से 28 नवंबर को गोवा में होने वाला है. We all know that हर साल ही गोवा में ही होता है ना. So remember this thing. And यहाँ पे आपकी 7 ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स को स्क्रीन किया जाएगा. Right. So this is the important thing about the festival. You should remember that it was established in 1952. This IFFI, International Film Festival, it was started in 1952 and it is one of the Asia's leading film festivals, right? Celebrating global cinema annually in Goa. So remember this thing, IFFI, 1952 it was established, Asia's leading film festival, and Goa every year. ठीक है. So remember this thing, ये कुछ facts है. और इस बार country of focus is Australia. This is your short note for this entire news. Next one is RBI makes 6 amendments in the KYC directions. ठीक है. KYC is what? Know your customer. ये क्यों start हुआ KYC? Why KYC? What is the purpose? See, what happened was earlier कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे. प्रॉब्लम्स लाइक दैट some other person impersonates that this is my account. They go to the bank and they withdraw the money. At that time there was no ID card, and if you just know the signature, you can withdraw some big amount of money. So multiple frauds and things were going on. So in order to stop that, RBI decided to start this KYC, and in KYC we use Aadhaar and PAN card to identify the person. Yes. So whether the person is genuine person or not, how we are going to identify? We are going to identify through some ID card. So Aadhaar and PAN card are the two most important documents for KYC. Okay. So RBI ने कुछ 6 amendments किए हैं in the KYC directions, right? And what is the purpose? So purpose is to prevention of money laundering. Okay. Remember this thing, prevention of money laundering and implementation of the unlawful activities prevention act. इस दो एक्ट्स के तहत, right, ये सारी चीज़ों को रिवाइज किया गया, right? So what are the key amendments here? Customer acceptance policy. So customer due diligence to be applied at the unique customer identification code level. देखो ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना. ये बस देख लो. इसमें बेसिकली
आरबीआई की तरफ से कुछ चीज़ों को बोला गया कि ज़्यादा आप इस पर अलर्ट रहिए, है ना। पेरियोडिक केवाईसी अपडेट, हाई रिस्क अकाउंट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज किस किस एक्ट में अमेंड किया गया है। सो वन इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 and the second one is unlawful activity prevention act 1967. These are the two most important acts, right? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बनेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टर्मिनोलॉजी चेंजेस बनेंगी, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये सारी चीज़ों को चेंज किया जाएगा। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। चलो, SBI raises 5,000 crore via ATI bonds at 7.98%. ठीक है, so what is this? SBI issuing bonds. Bonds is what? A capital market instrument, right? So they have issued this bonds and they have raised 5,000 crore rupees. The name of this bond is ATI bond, AT1 bond. Okay, additional tier 1 bonds, right? So they have issued this under by its first Basel 3 compliant additional tier 1 bonds, ठीक है। सो इस बॉन्ड का देखो, अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज अ कैपिटल मार्केट टूल बॉन्ड्स, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर। सो यहाँ पे क्या है, 10 ईयर्स का है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, एंड दिस इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 3.5 टाइम्स, मतलब 3.5 टाइम्स ज़्यादा लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया, ओके। सो काफ़ी पैसे आए हैं और इस बॉन्ड की रेटिंग जो है वो AA प्लस है। इट मीन्स इट इज स्टेबल एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, सो इट इज़ अ गुड मेथड इफ यू वांट टू मेक सम मनी, यू कैन यूज दिस थिंग, बॉन्ड्स एंड ऑल दिस थिंग। और इसका इंटरेस्ट रेट है जो 7.98% कूपन रेट है, राइट। चलो, ये रेट याद रख लेना, एंड हाउ मच मनी दे हैव सिक्योर्ड बाय 81 बॉन्ड्स। सो 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझ लो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इट इज अ हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट। सो इन हाइब्रिड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इट इज। सम मनी वुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी and some money it would be invested in your debt, okay. So remember this thing, and it is a part of the bank's tier 1 capital. ये क्लियर है? राइट। सो टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया रहता है, राइट। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया रहता है, रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट। ऑल्सो ये जो 81 बॉन्ड है इसमें फिक्स या फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन, एंड दे कैरी ए हायर रिस्क देन द रेगुलर बॉन्ड एज दे मे बी रिटर्न ऑफ और कन्वर्टेड इनटू इक्विटी विथ बैंक कैपिटल फॉल्स बिलो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड। तो थोड़े रिस्की भी होते हैं ये, ओके। सो यहाँ पे इतना ही बस आपको ध्यान रखना है, बहुत डेप्थ में आपको नहीं इसको पता करना है, क्लियर। सो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर 81 बॉन्ड? इट इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, जिसमें शेयर होल्डर्स के पैसे लगे रहते हैं, ठीक है। दिस बॉन्ड्स हैव नो मैच्योरिटी डेट, मीनिंग दे आर परपिचुअल। परपिचुअल मतलब नो एंडिंग डेट। सो ये या तो अब 10 साल बाद कर लो या कभी भी कर लो, है ना, इस पर कोई एंडिंग नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन जब आपको इसको रिडीम करना है, ओके। कूपन पेमेंट्स होते हैं, इट ऑफर्स फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जो भी आप प्रेफर करते हो, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन बैंक की भाई फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ऑल्सो दिस इज रिस्की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। Government appoints S. Gopal Krishna as the chairman of SSC. So again appointment related news. So staff selection commission, जो SSC के आपके एग्जाम होते हैं ना, उसको जो कंडक्ट कराती है अथॉरिटी,
उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं मिस्टर एस गोपाल कृष्णा. ही इज अ 91 बैच आईएएस ऑफिसर. हर जगह टॉप पे देयर इज आईएएस ऑफिसर हु इज सिटिंग. ओके. एंड बिफोर हिम राकेश रंजन हु वाज द 92 बैच आईएएस ऑफिसर. ही वाज द पर्सन. ठीक है. और देखो इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया बिकॉज यू हैव सीन दैट इन एसएससी देयर वाज सेवरल इरेगुलरिटीज दे वर फेसिंग, पेपर लीक एंड ऑल दोस थिंग. तो इसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. क्लियर. चलो. सो रिमेंबर द नेम एस गोपाल कृष्णा, SSC. Now science and tech related news. China launches Shenzhou 19 with 3 new crew to Tiangong space station. ठीक है. Tiangong क्या है? Tiangong is what? Name of the China's space station. Okay. And through this rocket, through this satellite, they have sent 3 members to the Tiangong space station. The name of the rocket through which they have sent this person was Long March 2F. Okay. Tiangong is the space station of China. Alright. So remember this thing. और ये 3 लोग थे, काइजू, सोंग लिंगडोंग एंड वैंग हाउजे. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम. इन नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है. बस ये याद रखिएगा. टियांगोंग क्या है? नेम ऑफ द चाइनीज स्पेस स्टेशन. शेंजू 19 थ्रू विच 3 पीपल वर सेंट टू द टियांगोंग. ये आपको 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है. ओके. नाउ लेट्स डू. अच्छा, वन 1-2 न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना. सो 1-2 न्यूज़ें आप और रेडी कर लेना. वेयर शुड आई राइट. चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट वन इज पंकज आडवाणी. पंकज आडवाणी, ही इज अ बिलियर्ड्स प्लेयर. ओके. Let me use some different color. I believe it is not visible. Just write it down. This is also not a good color. Black ही use कर लेते हैं. हाँ. Yes, this is fine. Pankaj Advani, he has won the billiard title. Okay. वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में ये जीत गए थे. वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप. ठीक है. ये दोहा में हुआ था, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप. ओके. एंड ही हैज वन दिस चैंपियनशिप फॉर द 28th वर्ल्ड टाइटल. तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है और 7वीं बार लगातार जीते हैं इन्होंने. राइट. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो सिंस 2016 इन्होंने लगातार ये चैंपियनशिप जीती है. ओके. सो ये हुआ कहाँ था? दोहा में. राइट. चलो. Now let's do some MCQs. So let's solve. Question 1 is Aditi 3.0 and DIS 13 were launched by Ministry of Defense. इन सब पोस्ट पर फॉर्मर IPS ऐसे क्यों ही अपॉइंट की जाती है? कोई सी देखो, IAS को इसलिए अपॉइंट किया जाता है ना. देखो IAS इज अ जनरलिस्ट पोस्ट, इसलिए तो IAS को बोला जाता है जनरलिस्ट. ये आपको जो अब जैसे देखो BSF है ना. BSF एक सिक्योरिटी फोर्स है. इसका भी जो हेड होगा ना, हमेशा IPS को बना देते हैं. बट देखो BSF में लोग नीचे से भी जाते हैं, है ना. वंस यू क्लियर द CAPF एग्जाम यू बिकम अ असिस्टेंट कमांडेंट. बट वो लोग प्रमोट होके हेड तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. तो इस वजह से IPS को बना दिया जाता है और इस वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी है. ये डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई ये जो IPS है इन्होंने BSF में सर्व ही नहीं किया है. दे हैवंट सर्व्ड इन द BSF, सो हाउ यू कैन मेक हिम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. आप तो हमारे डिपार्टमेंट के ही बंदे को हेड बनाओ ना. यू शुड मेक अवर पर्सन हु हैज सर्व्ड इन BSF फॉर हिज एंटायर लाइफ, मेक दैट पर्सन द हेड ऑफ द BSF. Similarly, in majority of the government departments, the IAS is also always at the top. That's why UPSC की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. ठीक है.
That's why more and more people are focusing in UPSC, because once they clear it, they feel that everything is sorted. Chalo. Aditi 3.0 aims to foster innovation through high power microwave system. We have seen this. DIS 13, AI and autonomous system. Yes. Both Aditi and DIS 3 were launched during the Solomon 3.0 initiative. So the correct answer is all of them. All three statements are absolutely correct. We have seen this. Which of the country has been selected as the country of focus for the 55th edition of the International Film Festival? So the correct answer is B, Australia. Okay. So ये कहाँ पे होता है हर साल? गोवा में. ठीक है. Let's be really quick. Which of the following statements are correct regarding AT1 bonds? It has hybrid debt instrument used by bank to raise capital under Basel III regulations. We have seen absolutely yes. 81 bonds have a fixed maturity date and must be repaid by issuing bank. No, it has no fixed maturity date. It is a perpetual bond. Perpetual, it means no ending date. So only one is correct. Okay. So they are perpetual in nature. Next one is, what is the primary purpose of the MOU signed between Indian Railways and Switzerland? To enhance trade, to foster technical cooperation, to improve tourism, to establish a bilateral railway project. So the correct answer here is yes, B, to foster technical cooperation in railways. Right. Who has been appointed as the chairperson of SSC? So we have seen this. S. Gopalakrishnan has been appointed as the chairperson of SSC. Okay. Now your practice homework question. What is the name of the China's crew space mission to the Tiangong Space Station? क्या नाम है जिस क्रू के, जिस स्पेस मिशन के थ्रू ये 3 क्रू को टियांगोंग स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आफ्टर द वीडियो इज फिनिश्ड. ओके. तो जो भी लोग देख रहे हैं, those who are new to the channel, do join this Telegram channel. I share all the important PDFs here. Clear? चलो, किसी को कोई डाउट? थोड़ा लंबा सेशन हुआ, बट we have to cover 2 days current affairs, है ना? चलो, if you have any question, do mention in the Telegram channel. I'll try to answer it. Also हमारे कुछ ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप यहाँ से देख लेना. बैंकिंग सुपर एलिट प्रोग्राम है फ्रॉम ऑफ ऑलीवुड. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल बैंकिंग एग्जाम्स, सो ये एक सिंगल आप प्रोग्राम ले सकते हो. यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड you will have the access for every type of banking exam. So every type of mock test, multiple, you have all the access to all the live classes for each bank exam, previous year papers, right, doubt clearing session, class PDF. So you would be having the access for everything. ठीक है. So ये आप यहाँ से कर सकते हो, right? चलो, okay then, I'll see you in the next video guys. Till then, have a great day and Jai Hind.